Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Anchal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So students, as you know that we were doing unit number 8 of our GK syllabus, and today I'm going to start with the one more topic of the same unit number 8, that is sobriquets. Okay, so today I'm going to start with the next topic. The name of the topic is sobriquets, given at page number 40 in your GK book. So all of you kindly open your books at page number 40, that is sobriquets. So I just write the topic on the board, that is sobriquets, Q-U-E-T-S, sobriquet. Okay, given at page number 40, that is sobriquets. Okay, so now what is sobriquets? So sobriquets क्या होता है? So let's read out the heading and the meaning of this topic will be clear to you all. Some countries and cities have special names or phrases that describe the character of someone or something. These are called sobriquets. Name these countries and the cities from their sobriquets. Choose the correct answer from the help box. So here in this topic, so the topic is sobriquets. So what is the meaning of sobriquets? So sobriquets का मतलब क्या होता है? देखिए बेटा, sobriquets का मतलब होता है कि any special name that is given to a place or a किसी जगह को एक स्पेशल नेम देना अकॉर्डिंग टू इट्स करेक्टरिस्टिक्स, अकॉर्डिंग टू इट्स फीचर्स. जैसे कि लाइक जयपुर इज नोन एज द पिंक सिटी. वाई? बिकॉज देयर इज अ प्लेस इन जयपुर, वहाँ पे जो सब कुछ है, एवरी बिल्डिंग इज सेम. एक्चुअली इट्स अ मार्केट, नॉट अ बिल्डिंग इज है नहीं, वो एक मार्केट है. ओके, एंड दैट इज कम्प्लीटली पेंटेड पिंक, सो दैट्स वाई इट इज नोन एज पिंक सिटी. ओके, तो वहाँ पे जो देखिए कोई सॉब्रिक्यूट्स का मतलब एनी स्पेशल नेम गिवन टू समथिंग अकॉर्डिंग टू इट्स स्पेशलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू इट्स स्पेसिफिकेशन. ओके, ज़रूरी नहीं है नाम ही दिया जाए, समटाइम्स नोन एज फ्रेजेस भी दिए जाते हैं. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको उनके अलग अलग नाम से बुलाया जाता है ड्यू टू इट्स स्पेशल फीचर्स, ड्यू टू इट्स स्पेशल कैरेक्टर्स और ड्यू टू इट्स व्हाट वी कॉल इट फ्रेजेस के और भी बहुत सारे फ्रेजेस अलग अलग नाम से उनको बुलाया जाता है. ओके, सो द रीज़न बिहाइंड इट बिकॉज दैट पर्टिकुलर थिंग इज स्पेशलाइज इन दैट थिंग. उस चीज़ को वो चीज़ उस चीज़ में स्पेशलाइज. जैसे कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आवर ओन सिटी, दैट इज़ वाराणसी. तो वाराणसी इज नोन एज सिटी ऑफ घाट्स. वाराणसी को सिटी ऑफ घाट्स कहा जाता है. वाई? बिकॉज हेयर द नंबर ऑफ घाट्स दैट द अदर सिटीज़, ओके, बाकी सारी सिटीज़ जहाँ पे भी कोई भी नदी बहती है उसके कंपैरेटिवली द वाराणसी हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ घाट्स. तो बनारस में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ घाट्स हैं. सो दैट्स वाई इन जो हमारा ये व्हाट दैट्स वाई वाराणसी इज़ नोन एज सिटी ऑफ घाट्स. तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे घाट्स हैं. ओके, सो ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी सिटीज़ हैं दैट आर नोन अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशल फीचर्स, अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन. Okay, so in this we are going to talk about some of the countries and the cities from the what are the various sobriquets. Okay, what are the various names that is given to them. Okay, so first of all I'll talk about the two tidbits that is given in your book. The first one is, because of the Earth's tilted axis during summer in the northern hemisphere, the North Pole is tilted toward the sun. This results in long period of daylight. This is why Norway and Alaska are both known as the land of midnight sun. Okay, so now I'm talking about the Alaska and the Norway. These are the name of the two countries, that is Alaska and Norway. के दो countries के name हैं. These two countries are known as the sobriquet, or you can say that sobriquet. So the sobriquets of Alaska and Norway is midnight land of midnight sun. उनको land of midnight sun क्यों बोला जाता है?
व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, इसके पीछे रीज़न क्या है? सो द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि क्योंकि वहाँ पे देखिए जब समर्स होती हैं तो उस टाइम कहते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो अपने एक्सिस से, लाइक इट इज़ मूविंग ऑन इट्स एक्सिस, तो अपनी एक्सिस थोड़ी सी टिल्टेड हो, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, मतलब ड्यूरिंग समर्स, जब समर्स होती हैं तो इट इज़ बिलीव दैट द अर्थ है जो थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है फ्रॉम इट्स एक्सेस, जिसकी वजह से जो सूरज की रोशनी है वो नॉर्वे और अलास्का, ये दो कंट्रीज़ में बहुत देर तक रहती है। ओके, तो वहाँ बहुत देर तक तो डे लाइट रहती है, मतलब वहाँ पे बहुत देर तक दिन, देखिए सूरज की रोशनी रहेगी तो ऑब्वियसली दैट मीन्स देयर शुड बी अ डे लाइट ऑब्वियसली, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डे लाइट भी होगी। ओके, so Norway and Alaska में during the summers when the earth is tilted from its axis, so there is a long daylight, तो वहाँ पे जो दिन है बहुत लंबे लंबे होते हैं due to the sunrise, so इस वजह से इनको बोला जाता है the land of midnight sun। ठीक है, तो क्योंकि बहुत लंबी लंबी दिन होते हैं वहाँ पे, तो क्या कि रात के टाइम पे वहाँ पे भी थोड़ा बहुत उजाला रहता है। ओके, ड्यू टू द सन रेज और वट एवर। ओके, सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द सिटी ऑफ it is known as this is known as Norway and Alaska and Norway is known as land of midnight sun. Clear? So then what the question is, name the sobriquets. Okay, what is the land? Okay, question again, land of midnight sun, land of midnight sun लिखा हुआ आ जाएगा and you will write down Norway and Alaska. Okay, next is the next second tidbit is given at the bottom here. The Tibetan Plateau is also known as the roof of the world, since some of the world's highest mountains ranges begins here. Okay, so Tibetan Plateau. Okay, so that there is a name, there is a plateau in the Tibet, so that is known as Tibetan Plateau. तो तिब्बत में एक प्लेटू है जिसको तिब्बतन प्लेटू बोला जाता है। ओके, उसका द व्हाट इज द सॉब्रिक्यूट फॉर दैट, दैट इज दैट तिब्बतन प्लेटू इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। Okay, that Tibetan plateau is known as the roof of the world, उसको roof of the world बोला जाता है। What is the reason behind it? So why? Because यहाँ पे जो बहुत सारी जो mountain ranges हैं, that starts from here. Okay, so इसीलिए इसको roof of the world बोला जाता है। तो sobriquet for the Tibetan plateau is roof of the world. Okay, so I hope now you understood what is the meaning of sobriquets. Okay, so the land of midnight sun is Alaska and Norway, and the roof of world is for is for Tibetan plateau. So Tibetan plateau is known as the roof of the world. Okay, now beginning with the topic, some of the 10 blanks are there and we are going to name the sobriquets. Okay, so we are going to name the various countries and cities, and this क्लूज आर गिवन अबाउट, मतलब उनके बारे में कुछ छोटे छोटे क्लूज है, उनकी स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे द सॉब्रिक्यूट्स आर गिवन। सो सॉब्रिक्यूट्स फॉर द वेरियस सिटीज एंड कंट्रीज आर गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट दैट दिस सॉब्रिक्यूट्स बिलोंग टू विच कंट्री और विच सिटी, कौन सी सिटी या कौन सी कंट्री के साथ ये जो सॉब्रिक्यूट हम जो बोल रहे हैं जो उससे मैच करता है। क्लियर? स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, the gift of the Nile. The first sobriquet is the gift of the Nile. So the gift of the Nile is the sobriquet for Egypt. Okay, so आपने if you remember तो pyramid of Egypt जो जिसको pyramid of Giza बोला जाता है, so Giza is the pyramid of Giza is a place that is in Egypt. Okay, and that pyramid of Giza lies on the bank of river Nile. तो नाइल जो नदी है उसी के किनारे ये पिरामिड ऑफ गीज़ा है जो लोकेटेड है। ओके, सो द पिरामिड ऑफ गीज़ा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नाइल दैट इज इन इजिप्ट। ओके, सो द गिफ्ट ऑफ नाइल, सो दैट मीन्स जो नाइल रिवर इज इन एंड नाइल रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे लंबी रिवर कौन सी है? दैट इज नाइल रिवर। ओके, सो द गिफ्ट ऑफ नाइल, okay, so the gift of Nile is Egypt. So the Egypt country is known as gift of Nile. So the answer of the first one is Egypt. E-G-Y-P-T. Egypt is known as gift of Nile. Chaliye. Next one, second one, the land of the rainbow. The land of the rainbow. Okay, so which country is known as the land of rainbow?
that is Hawaii. So Hawaii is known as the land of rainbow because in that a number of rainbows can appear during at a time, and you can see a number of rainbows in the sky that in Hawaii. तो हवाई में एक ही टाइम पे आपको बहुत सारी मतलब रेनबोज एक ही टाइम पे दिखती हैं. ओके, बिकॉज देखिए वहाँ पे जो काफ़ी बारिश होती रहती है और सन की जो ब्राइटनेस में, तो यू नो द रेनबो क्या बात है, जब बहुत ज़्यादा बारिश के बाद जब सीधे से सूरज निकलता है, सो यू कैन सी द रेनबो इन द स्काई. एंड इट रियली हैपन्स इन आवर कंट्री कि हम बहुत ही कम ये चीज़ हमें नज़ारा देखने को मिलता है. बट इन हवाई यू कैन सी दिस व्हाट वी कॉल इट, दिस सीनरी वेरी मतलब बहुत ही ईजिली कॉमनली, तो आपको बहुत ही कॉमनली यू कैन सी दिस सीनरी. ओके, सो एट अ टाइम यू कैन सी अ नंबर ऑफ रेनबोज इन द स्काई इन द हवाई. सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द सिटी ऑफ रेनबो. एक ही टाइम पे हवाई में आपको बहुत सारी जो रेनबोज हैं वो दिखेंगी. सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज city the land of rainbow. So the land of rainbow is a sobriquet for Hawaii. Okay, so the answer of the second one is Hawaii. H H A W A I. Okay, H A W A I. So Hawaii, H A W A double I. It will be double I. So Hawaii is the name of a country which is known as the land of rainbow. Moving next to the third one, the land of white elephants. The land of white elephants. So which country is known as the land of white elephants? कौन सी कंट्री को लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स बोला जाता है? दैट इज थाईलैंड. सो यू कैन फाइंड नंबर ऑफ वाइट एलिफेंट, मतलब आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ वाइट एलिफेंट्स इन द थाईलैंड. तो थाईलैंड में आपको बहुत ज़्यादा वाइट एलिफेंट्स दिखेंगे. सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स. ओके, वहाँ पे बहुत यू कैन फाइंड मतलब देखिए हमारे इंडिया में वी कैन फाइंड द एलिफेंट्स दैट इज ब्लैकिश, ब्लैकिश ब्राउन एंड ग्रे. तो ग्रे और ब्लैकिश ब्राउन कलर के एलिफेंट्स आपने देखे होंगे, बट वाइट कलर के एलिफेंट्स यू कैन फाइंड इन द थाईलैंड ओनली. तो थाईलैंड में आपको वाइट एलिफेंट्स कॉमनली नजर आ जाएंगे. सो दैट्स वाई दैट दिस थाईलैंड इज नोन एज द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स. सो द आंसर ऑफ द थर्ड वन इज थाईलैंड. T H A I L A N D. Okay. Next, fourth one, the land of thunderbolt. Okay, the land of thunderbolt. So which country is known as the land of thunderbolt? That is Bhutan. So Bhutan is known as the land of thunderbolts because वहाँ पे जो thunderbolts हैं वो बहुत आते ही रहते हैं commonly. वहाँ पे you can feel the thunderbolts there. So that's why Bhutan is known as the land of thunderbolts. ठीक है, वहाँ पे thunderbolts के झटके हैं जो महसूस होते ही रहते हैं. Okay, so that's why it is known as the land of thunderbolts. So the answer of the fourth one is the land of thunderbolt is Bhutan. That is Bhutan. 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 So Bhutan is known as land of thunderbolts. So Bhutan is known as the land of thunderbolts. Next, fifth one, the land of thousands lakes. So the lake where you can say find number of lakes, that is Finland. So there are thousands of lakes in the Finland. Finland में बहुत सारी झीलें हैं. So that's why it is known as land of thousand lakes. Okay, so there's a place in India as well जिसको हम district of lakes बोलते हैं. So which is the district of lakes in India? That is Nainital.
ओके तो नैनीताल में जो हमारे इंडिया में है, तो नैनीताल हैज़ ऑल्सो, नैनीताल में भी बहुत सारी लेक्स हैं, सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज सिटी ऑफ लेक्स और डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स बोला जाता है, दैट इज़ नैनीताल. जस्ट लाइक दैट यू कैन फाइंड नंबर ऑफ लेक्स in the Finland. Okay, thousands of lakes, not the number of lakes. You can find number of lakes in the Finland. So that is why this Finland is known as the land of thousand lakes. Okay, so the sobriquet for the Finland is the land of thousand lakes. So the answer of the fifth one is Finland. Finland. So Finland is known as the land of thousand lakes. Okay, just let me write it clearly. That is Finland is known as the land of thousand lakes. Okay. So these are the answers of first five. The first five is the gift of Nile is Egypt. The lands of rainbow is Hawaii. The land of white elephants is Thailand. The land of thunderbolts is Bhutan. And the land of thousand lakes is Finland. You can just pause your videos here and note it down in your notebook, in your books. Chaliye. Now moving next to the sixth one. Sixth one is, okay, the next is the sugar bowl of the world. So which, what we call it, okay, which country is known as the sugar bowl of the world? किस country को sugar bowl of the world माना जाता है? That is Cuba. Cuba is known as the sugar bowl of the world. चीनी का भरा हुआ कटोरा जिसको हम हिंदी में बोलेंगे, बिकॉज आई थिंक वहाँ पे शायद शुगर केन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है. सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड. Okay, so the sugar, but so this is a sobriquet. Sugar bowl of the world is the sobriquet for Cuba. Okay, so the sugar bowl of the world is Cuba. So the answer of sixth one is Cuba. CUBA. That is Cuba. So Cuba is known as the sugar bowl of the world. Okay, next. Moving to the seventh one, the city of joy. So which city is known as the city of joy? So now the question has been changed. Earlier we were talking about the different lands, मतलब countries की बात कर रहे थे. Now we are talking about the cities. Okay, so now the question is the city of joy. The city means शहर. The city of joy is Kolkata. The city of joy is Kolkata. So the Kolkata is known as the city of joy. Why it is known as the city of joy? So the reason behind it, because the people, they live such a happy life. They are so jolly people are there. You can find jolly people in the city of Kolkata. Okay, तो कोलकाता के जो लोग हैं, they are so jolly. They just enjoy their lives. Okay, देखिए वो ये नहीं है कि वो काम नहीं करते, कुछ नहीं करते. They also do the work, but as well as they also enjoy their lives as well. Okay, so that's why the life in the Kolkata city is very happening. The people, they love to visit there. Okay, so the city of joy is Kolkata. So city of joy is Kolkata. That is the answer number 7. Kolkata. So Kolkata is known as the city of joy. Kolkata is known as city of joy. चलिए, moving next to the 8th one, the land of cakes. Okay, so the next, now the question is the land of cakes. So that means now we are talking about a country. Okay, so before that this was city okay. Now we are talking about the land. So the land of cakes, that is Scotland. So Scotland is known as the land of cakes. So the land of cakes is
Scotland. So Scotland is known as the land of cakes. Okay, so the land of cakes is Scotland. That is the answer of 8th one. Scotland. So Scotland is known as the land of cakes. Scotland is known as the land of cakes. Next, moving to the 9th one, Emerald Island. Okay, so the next we are talking about, that is Emerald Isle. So what is the Emerald Isle is the sobriquet for Ireland. So Ireland का sobriquet क्या है? That is Emerald Isle. So what is the meaning of Emerald? Emerald means greenery. Okay, हर तरफ जो चीज़ होती है वो green. You can see greenery there. So that is the meaning of Emerald. Okay, so Emerald. Okay, now moving next. ओके, सो एमलैंड का मतलब होता है बेटा ग्रीन. ओके, सो जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रीन चीज़ें अवेलेबल होती हैं, या ग्रीनरी आप कह लीजिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है, उसको हम बोलते हैं एमरलैंड सिटी या एमलैंड जो भी है. सो हियर, सो विच कंट्री इज़ नोन एज द एमरलैंड आइसले? दैट इज़ आयरलैंड. सो आयरलैंड इज़ नोन एज एमरल्ड आइसले. आयरलैंड, IRELAND. Okay, so Ireland is known as Emerald Isle. Moving to the 10th one. So the 10th is the city of 7 hills. Okay, the city of 7 hills, that is Rome. तो रोम को city of 7 hills भी बोला जाता है. So why it is known as the city of 7 hills? The reason behind it, because there you can find the 7 hills that जो कि सातों के सातों जो हिल्स हैं, दैट दे 7 ऑफ दैट हिल्स दे लुक अलाइक, वो एक जैसे लगते हैं. सो एंड दे आर ऑल्सो नोन एज 7 सिस्टर्स. वो जो 7 हिल्स हैं, ओके, उनको 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है. ओके, एंड यू कैन फाइंड दीज 7 हिल्स दैट लुक अलाइक इन द रोम. ओके, सो रोम इज द नेम ऑफ अ सिटी. सो द सिटी ऑफ 7 hills is Rome. The city of 7 hills is Rome, and those 7 hills are also known as the 7 sisters. City of 7 hills is Rome. Okay. चलिए, so this is the answer of the 6 to 10. 6th is Cuba, the sugar bowl of the world. Kolkata, city of joy. And the Scotland, city of cakes. Ireland, city Emerald Isle. Rome, city of 7 hills. Now moving next. Okay, so now you can see some of the pictures that is given in your book. So here I am just writing some of the topics here. So kindly just note it down in your notebooks. तो कुछ हैं जो 2-3 एक्स्ट्रा मैं आपको लिखवा रही हूँ, जो आपके बुक में दिए हुए हैं. ओके, गोल्ड. ओके, द फर्स्ट वन इज लैंड ऑफ golden pagoda. Okay, so the land of golden pagoda. The land of golden pagoda is Myanmar. That is MYANMAR. Okay, so Myanmar is known as the land of golden pagoda. So what is golden pagoda? गोल्डन पगोड़ा होता क्या है? ओके, सो इट्स लाइक एक जैसे कहते हैं गुम्बद होता है, जैसे गुरुद्वारे में हम देखें ना तो गुम्बद, ठीक है, वो पगोड़ा की तरह होता है, गोल होता है. स्पेशली दीज आर इन द टेम्पल्स, या हम गुरुद्वारे की अगर बात करें, वहाँ पे जो ऊपर हाई पॉइंट होता है वहाँ पे गोल सा होता है, जो टॉप में होता है ना गुरुद्वारे जो, और ये टेम्पल गोल होते हैं, ये लंबे होते हैं. सो दैट इज़ द पगोड़ा. Okay, so there you can find the golden pagodas in Myanmar. So you can see in your picture as well. Okay, so this is the picture that is given in your book. Okay, so this is the picture of pagoda. इन जो ये जो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, गोल्डन कलर का जो आपको नज़र आ रहा है, that is pagoda. Okay, and you can find number of pagodas in the Myanmar. Okay, so that's why this
Myanmar is known as the land of golden pagoda. Okay. Second one is the land of windmills. The land of windmills, that is Netherlands. तो नीदरलैंड में यू कैन फाइंड नंबर ऑफ विंड मिल्स. नंबर ऑफ विंड मिल्स मतलब जो बड़े बड़े होते हैं ना, लंबी सी स्टैंड पे एक जो पंखे की तरह होते हैं, बड़े बड़े पंखे हम जो होते हैं, दैट आर विंड मिल्स. उनको पंखे नहीं बोला जाता, उनको फैंस नहीं बोला जाता. दोज आर विंड मिल्स एंड दीज विंड मिल्स आर बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इन विंड मिल्स का जो है यूज़ होता है. ओके, सो इन दैट अलॉन्ग विद दैट विंड मिल्स एक रोप कनेक्टेड होती है जिसके नीचे जनरेटर होता है. और जैसे ही वो विंड मिल्स घूमती हैं, okay, so when this windmills move, so that generator also moves, that rope also moves along with that. Okay, and when they moves like this, so then that वो generator को भी move करती हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है जो प्रोड्यूस होती है और वो उसमें स्टोर भी होती है. Okay, so these windmills, so you can find number of windmills in the Netherlands. वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब नीदरलैंड में बहुत ज़्यादा विंडमिल्स होती है. और ये जो मोस्टली जो विंडमिल्स होती है बेटा, दे आर इन अ वेरी मतलब बहुत ही खुले मैदान में होती हैं. ओके, सो द लैंड ऑफ विंडमिल्स इज नीदरलैंड्स. दैट इज द सेकंड वन. जस्ट राइट डाउन इन योर बुक. कहीं बुक में लिख लीजिए और यू कैन राइट इन द नोटबुक एज वेल. द लैंड ऑफ windmills, the land of windmills. The land of windmills is, that is written here, the land of windmills is Netherlands. N-E-I-T-H-E-R, Netherlands. L-A-N-D. Netherlands. So Netherlands is known as the land of windmills. Okay, you can find number of windmills there. So that's why it is known as the land of windmills. Okay, I just write it again. The land of, that is Netherlands. Next. Okay, so that is the land of rising sun. So which country is known as the land of rising sun? That is Japan. तो जापान को the land of rising sun बोला जाता है. Okay, because you can see you can see the very beautiful view of rising sun. एक सूरज को उगते हुए जो होते हैं, जो एक व्यू होता है, that is very beautiful there. So that's why it is known as, Japan is known as the land of rising sun. इसलिए जापान को the land of rising sun बोला जाता है. सो जस्ट राइट इन योर नोटबुक, लैंड ऑफ राइजिंग सन. लैंड ऑफ राइजिंग सन, दैट इज जापान. JAPAN. So Japan is known as the land of rising sun. Okay, अभी फिलहाल इतना ही लिखिए. इसके बाद there are 2 more. Just note it down in your books or the notebooks. Okay, by pausing your videos here. The land of golden pagoda, that is Myanmar. The land of windmills, Netherlands. Okay, Netherlands means Netherlands. It's not land, it's Netherlands. Okay, and the land of rising sun, that is Japan. Okay, moving next to the 4th one. अभी देखिए, जो मैंने आपको टिटबिट करवाया था उस टाइम पे मैंने इनके बारे में बताया था. द लैंड ऑफ मिडनाइट सन. द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, दैट इज द 4th वन. द लैंड ऑफ midnight. The land of midnight sun. What is the land of midnight sun? That is Norway and Alaska. Norway and Alaska.
ALASAKA. So Norway and Alaska is known as the land of midnight sun. Okay, next is the roof of the world. The roof of the world. So roof of the world जो sobriquet है वो किसके लिए यूज किया जाता है? The roof of the world sobriquet is being used for Tibetan plateau. Okay, that is being used Tibetan. TIBET Tibetan plateau. PLATEAU. Tibetan plateau is known as the roof of the world. Okay, so this was the topic, sobriquets. Okay, so we have done 4-5 more topics from the same. Okay, so this was our today's session class. So with this, I'm just ending the session here only. So I hope that you enjoyed it well. Okay, so I'll see you again very soon in our next session. So till then, everybody, have a good day.